Hello बच्चों, so I welcome you all to the daily newspaper analysis at Tadhastu ICS. So first thing first, let me tell you all the articles that you need to cover for today's The Hindu Delhi edition. And as I have always told, whenever you start watching this session, open your newspaper and mark these articles. So the first article that is important today is Kerala on alert as man dies of West Nile fever. So why this article becomes important for you? Let us understand with respect to your syllabus. So for which part of the syllabus this article is important? This is important for GS paper 2 and it is on page number 5. All right, issues relating to development management social sector. So the first article, get to know about what is West Nile fever, what are the causes, which bacterium or zoon or worm causes it, is it worm based fever, it is bacterial, it is viral, what it is, you have to understand. Then a dignified peaceful passing is everyone's right. Page number 6, rules for a new dawn for the Indian legal industry. Then fourth is plastic solution. What is plastic solution? What are the solutions? What are the way ahead? All these things are mentioned and easily readable by you. Nothing to be discussed about it. Nothing to be explained. You can read on your own. Let's save time. Then an inheritance tax will help reduce inequality. And when we were reading an article on inequality, Thomas Piketty's findings and the report about all the talks, all the debates about wealth inequality, inequality, yes, whether the wealth tax is good or bad. So here inheritance tax has been favored, and in previous article when we were discussing in very much detail the cause of inequality, what could be the solution, we had read that inheritance tax is a positive step which should be there, because inheritance tax in a way eliminates the inequality which is there present due to just by birth. मतलब मैंने अमीर घर में जन्म लिया, आपने गरीब घर में जन्म लिया, मैं बाय बर्थ बिना किसी एफर्ट के अमीर बन गई, ठीक है. सो इनहेरिटेंस टैक्स अगर है दैट कुड बी हेल्पफुल. देन कोटक महिंद्रा बैंक कंट्रोवर्सी, व्हाट हाई टेम्परेचर मैप गेट्स रॉन्ग अबाउट हीट वेव्स. अगेन आई हैव हाइलाइटेड दिस पॉइंट. वी हैव ऑलरेडी understood in detail what is heat waves, what are the heat island, how it is managed, heat wave action plan, all these things. HAP we have already discussed in detail. I would suggest you to go back to previous daily newspaper analysis and watch all the sessions. Lot of detailed discussion has been already conducted on the important topics, so let's not repeat things. That's why I always tell, अगर आप पेपर पढ़ रहे हो, रेगुलरली पढ़ रहे हो, ट्रस्ट मी, 1-1.5 महीने बाद आप प्रो हो जाओगे और आपको न्यूज़पेपर आपका 45 to 1 आवर में खत्म हो जाएगा, क्योंकि न्यूज़ बहुत सारी रेपिटेटिव रहती हैं, ठीक है. एंड देन एडवर्टाइजर्स शुड सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन बिफोर प्रमोटिंग प्रोडक्ट, सुप्रीम कोर्ट. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एनी न्यूज़ पूछते हो ना आप लोग कि कौन सा न्यूज़ पढ़ना है मैम, तो कुछ भी, कोई भी वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप उन आर्टिकल्स को डेफिनेटली पढ़ना है, उनके व्यूज क्या है वो देखना चाहिए. 9th article, civilized society will not glorify violence, India tells Canada. So yes, 9th article. Then 10th article, the unseen effects of climate change on mental health. So what is mental health, how climate change impacts mental health, all these things. So I hope you have opened your newspaper, you have tick mark these articles and you will read them on your own and understand. Let's take up 2 to 3 articles in detail which are important to be discussed, जो कि आप खुद पढ़ के समझ नहीं पाओगे. So let's go to the editorial analysis. And the first article that is important for us, a dignified peaceful passing is everyone's right. So there has been 2 instances of deaths, passings, which has stirred this debate that how one person should choose to die. How one person chooses to die. घर पे अपने लव्ड वंस के बीच में, अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली मेम्बर के बीच में रह करके somebody wants to take a leave from this world, or he wants to be lying on a bed in ICU separate from the family, और फैमिली मेम्बर्स बाहर बिल्स भरने में लगे हुए हैं और लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे इंसान बेड पे अकेले और मर रहा है, ठीक है, और फैमिली मेम्बर्स अपनी बात तक नहीं कर पा रहा है. तो किस तरीके से लोग मरना चाहेंगे, तो उसके लिए एक लिविंग विल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, दैट देयर शुड बी लिविंग विल. और वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में लिविंग विल हो रहा है, दिस काइंड ऑफ लिविंग विल इज बीइंग क्रिएटेड, और वहाँ पे लोग लिख रहे हैं कि हाउ दे वुड वांट टू पास, हाउ दे वुड वांट टू टेक अ लीव फ्रॉम दिस लाइफ. यहाँ पे
जैसे रोनाल्ड रीगन, द 40th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डाइड इन 2004 एट द एज ऑफ 93। एक तो ये है। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, ही डाइड इन 2018, 9 years आफ्टर अ स्ट्रोक दैट हैड लेफ्ट हिम नॉन एम्बुलेंट। द लास्ट 35 days of his life were spent in All India Institute of Medical Sciences in New Delhi. He died on artificial life support system. So we'll understand what is artificial life support system, what is palliative care, and you should also understand what is euthanasia, what is active euthanasia, what is passive euthanasia, is active euthanasia or passive euthanasia, which one is allowed in India. So आपको मीनिंग इसके पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम क्या है, आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या है, पैलिएटिव केयर क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, what is euthanasia, what is active euthanasia, what is passive euthanasia, which one is allowed in India, and what is all the debate around it. So this is what everything is mentioned in this. There is a very good essay that could be asked, and there is from this particular article exact line mentioned hai. Read this line. So modern society has become death illiterate. It calls for death literacy, which brings death back to life. A society that is brave enough to discuss death and dying among friends and family is likely to leave people empowered to cross that difficult bridge when they come to it. तो डेथ लिटरेसी क्या है? अगर पता होगा, अगर लोग बात करना शुरू कर देंगे कि हाउ दे वुड चूज टू डाई, हाउ दे वुड वांट टू स्पेंड द लास्ट डेज ऑफ देयर लाइफ, हाउ दे वुड वांट टू डाई, अगर ये जो अनकंफर्टेबल डिस्कशन है, अगर इसके बारे में बात हो सके, लोग लिटरेट किए जा सके, तो जो ये देयर शुड बी डेथ लिटरेसी, उससे काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, लोगों की लाइफ बेटर हो जाएगी. So let's say there is an essay on this. So through this article, this is very probable area in which can be asked in essay, in social justice, social issues, health, judicial intervention of paper 2, also ethics, also essay. So you could understand the significance of this article. तो ये है about this. One very important fact, we will read the entire article in deconstructed form. मैंने content extra जैसे मैं हमेशा additional देती हूँ, point wise सब headings वगैरह mention रहते हैं, तो ये वो we will look at the questions also, expected question also. Before it, just मुझे important lines आपको दिखानी थी इस article में जो आपको stress करना है पढ़ते वक्त. In India, approximately 70% of patients with incurable critical illness die on life support system. जो इनक्योरेबल क्रिटिकल इलनेस के थ्रू गुजर रहे हैं, उनमें से 70% लोग जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे जब रहते हैं वहीं मर जाते हैं, मतलब आईसीयू मर जाते हैं, और उनकी फैमिलीज बाहर बिल्स भर रही होती है. तो यू कैन अंडरस्टैंड द सिवियरिटी ऑफ द सिचुएशन, द पेनफुल पासिंग, एज वेल एज नॉट बीइंग एबल टू स्पीक अप, नॉट बीइंग एबल टू बी अराउंड देयर फैमिली एंड द लव्ड वंस. सो हाउ पुअर इज द सिचुएशन. So here there's a left against medical advice, discharge against medical advice, and ethically unjustifiable practice. We'll see what is lama, what is dharma. We will look all these things in detail. Then there is another fact. Look at this fact. In a survey of nearly 3,500 people in Pune, 83% of the people reported their preferred place of death to be their home. So, कितने सारे लोगों को, 3,500 लोगों को सर्वे किया गया, और उसमें से 83% लोगों ने बोला कि वो अगर when they are dying, they want to die in their homes, not in some hospital surrounded by doctors and life support system. All right, so these are some of the data you should pick and you should remember and you should write in your answers if questions are based on these topics. Now, the next line, read this, has been mentioned about passive euthanasia. So, ये बोल रहा है कि passive euthanasia में when we remove the life support system, when there is a death, तो उसको भी death ही बोलेंगे, उसको भी killing ही बोलेंगे. तो ये जो एक्टिव पैसिव यूथनेशिया का क्लासिफिकेशन है, दिस इज नॉट जस्टिफाइड एज पर द राइटर. वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज यूथनेशिया, व्हाट इज एक्टिव यूथनेशिया, व्हाट इज पैसिव यूथनेशिया. So next line, euthanasia involves killing even if the intentions are good. Therefore, euthanasia cannot be passive. Withholding or withdrawing artificial life support in the face of the futility of the treatment involves no act of killing. It only allows natural death. कहने का मतलब यह है कि what is euthanasia? जब कोई when there is a person and is in, जो उसको मतलब रिवाइव नहीं किया जा सकता, इतना पेनफुल सिचुएशन है, that is bound to happen. ठीक है, just a second. Yes,
when death is bound to happen, when there is a person जिसकी incurable suffering के through some person is going through, or there is a lot of pain, lot of suffering, when we end the life of the patient, ठीक है, when we end the life of the patient to limit the patient suffering, तो उसको यूथनेशिया बोलते हैं, ठीक है। यूथनेशिया क्या है? when some individual is under lot of suffering, lot of pain because of some incurable disease or incurable situation, so ending the life of the person is called euthanasia. There is two kinds of euthanasia. One is active euthanasia. So one is active euthanasia and another is passive euthanasia, ठीक है। active euthanasia क्या है? Alright, so euthanasia two types, active euthanasia, passive euthanasia. पैसिव यूथनेशिया क्या होता है? जब सिंपली लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे जिसकी वजह से लाइफ चल रही है किसी तरीके से, वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लिया जाए, ठीक है, दिस इज पैसिव यूथनेशिया. व्हाट इज एक्टिव यूथनेशिया? व्हेन समथिंग इज एडमिनिस्ट्रेड actively to end the life, मतलब by injecting some drug because of which the person dies, or some external administration of drug or something which ends the life of the person, that is active euthanasia. Passive euthanasia मतलब simply life support system को हटा लें और natural death हो जाए. अगर वो life support system ना हो तो इंसान वैसे भी the person will pass, the person will die. तो उस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा लो जिससे उसकी नेचुरल डेथ हो जाए. तो राइटर कह रहा है कि पैसिव यूथनेशिया इज नॉट किलिंग, पैसिव यूथनेशिया इज सिंपली पासिंग नेचुरली नेचुरल डेथ, ठीक है. सो दिस इज active and passive euthanasia that I wanted you to look at. Then now let's understand the articles in detail. First of all, let's look at the mains previous year question paper which has been asked on such topics. So in 2018 there was a question, ठीक है, appropriate local community level healthcare interventions is a prerequisite for achieving health for all in India. Explain. So ये question है. दूसरा, in 2020 भी क्वेश्चन पूछा गया है, to enhance the prospects social development, sound and adequate health care policies are needed particularly in the fields of geriatric and maternal health care. Discuss. यूपीएससी 2020 में तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन आर्टिकल का रेलेवेंस है. आप देख सकते हो कि यूपीएससी क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है. तो देखो, दिस इज हैज बीन मेंशन द फर्स्ट लाइन, डेथ इज इनएविटेबल. डेथ तो होना ही होना है, ठीक है, बट द वन सर्टेनिटी इन लाइफ एंड इट इज डेथ इज इनएविटेबल. डेथ होना ही होना है, और ये एक सर्टेनिटी, एक सच है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है. व्हेन द टाइम कम्स एंड इफ यू हैव एन इनक्योरेबल डिसीज, हाउ वुड यू लाइक टू गो? अगर वक्त आ ही गया है और किसी को इनक्योरेबल डिसीज है, तो हाउ दैट पर्सन वांट्स टू गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड, दैट इज द क्वेश्चन. वुड यू प्रिफर योर बेड इन योर होम with your loved ones around you, or to die in some hospital in some bed or surrounded by some unknown people, strangers? So all these things are the question which has been asked. The points that you need to know, that the context is this. I told you about Ronald Reagan's death and Prime Minister Atal Bihari Vajpayee's death. That steered the entire conversation on this. So life support system, palliative care, what is the difference? Life support system में simply when जो आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स हैं, सिर्फ उसको सिंपल जब दे करके लाइफ को प्रोलॉन्ग करने की कोशिश की गई है व्हेन देयर इज टर्मिनल इलनेस, ठीक है. पैलिएटिव केयर क्या है? पैलिएटिव केयर इज मोर काइंड ऑफ केयर, ठीक है, यू नो, टू मेक द लाइफ बेटर. और वो क्रिटिकल इलनेस भी हो सकती है, सिंपल बीमारी में हो सकती है जो आगे चल के बहुत बड़ी बीमारी हो जाए. तो पैलिएटिव केयर लाइफ की किसी भी स्टेज पे दिया सकता है. इज सिंपली टू मेक द लाइफ बेटर, टू मेक द लाइफ मोर फुलफिलिंग, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग हाउ, मतलब जैसे सिम्टम्स है, पेन है, उसको कम किया सके. डिस्ट्रेस रिगार्डलेस ऑफ द प्रोग्नोसिस, मतलब क्या सीवियरिटी है प्रॉब्लम की, इसके इररिस्पेक्टिव वी प्रोवाइड पैलिएटिव केयर सो दैट लाइफ इज बेटर, ठीक है. सो these are the things. Goals, timing are the two different thing in life support system and in palliative care. These are the two different thing. Euthanasia you should understand. Active passive euthanasia we have understood. Now some of the practices which has been written. Best scenario क्या है about end of life? Advanced directive for the common terminally ill allowed natural death by withdrawing life support, जिसको पैसिव यूथनेशिया बोल सकते हैं. यूरोप सिनेरियो क्या है? एक तो वेस्ट हो गया. यूरोप में क्या है? ओनली 10% डाई ऑन लाइफ सपोर्ट, अदर्स शिफ्टेड टू पैलिएटिव केयर. इंडियन सिनेरियो क्या है? 70% ऑफ इनक्योरेबल पेशेंट डाई ऑन लाइफ सपोर्ट इन आईसीयूज अलोन. तो ये बहुत ही यू नो क्वेश्चनेबल ट्रेंड है. मतलब वेस्ट में तो सिर्फ एडवांस डायरेक्टिव्स फॉर कॉमन टर्मिनली इल अलाउड नेचुरल डेथ बाय पैसिव यूथनेशिया अलाउड है वहाँ पे बहुत सारी जगह. यूरोप में पीपल
still 10% only die on life support. सिर्फ 10 लोग हैं जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे डेथ होती है उनकी, बट इंडिया में 70% का लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे डेथ हो जाता है, एंड दे आर नॉट अराउंड देयर फैमिली एंड देयर लव्ड वंस. द रिमेनिंग 30% die through left against medical advice. Now you have to understand what is left against medical advice. लामा डामा क्या है, ठीक है. Now let's understand what is lama and dama. So left against medical advice. All right, lama or discharged against medical advice. What is this? Refers to a patient leaving the hospital against the advice and recommendation of their treating healthcare providers. Cause क्या हो, इसका cause क्या हो सकता है? Financial distress. भाई बोल दिया हॉस्पिटल ने कि आपको इतने दिन तक रहना है, you have to be under observation in ICU, but people leave the hospital and it is against medical advice. Cause क्या है? Financial constraints, belief in alternative therapies, dissatisfaction with the care, obviously terminal advanced illness, lack of understanding about the treatment process. It adversely affects patients' outcomes, increasing the risk of mortality, all these things. The practice is considered ethically questionable as it represents unplanned treatment limitations without formal shift to palliative care. So by rather than putting the person on the life support system, shift in the palliative care, जिसकी वजह से बहुत सारे patient जो है that they will be contained in the care. Palliative care मतलब life support system नहीं, उनको ऐसे फैसिलिटीज देनी जिससे उनकी लाइफ बेटर हो सके. प्रोग्नोसिस कोई भी लेवल हो, पेन कितना भी हो, सफरिंग कैसा उसके लेवल के इररिस्पेक्टिव आकर के उनको जब पैलिएटिव केयर देते हैं तो पीपल सी द चेंजेस, सी दी बेनिफिट्स, सो दे आर बेटर कंटेन्ड इन दी केयर यूनिट्स. तो रादर देन पुटिंग देम इन लाइफ सपोर्ट सिस्टम, put them into palliative care. So these are the lama and dama meaning. Then challenges in Indian context. Challenges क्या है? So there are a lot of ICU routinization. There is a lack of legal clarity. Passive euthanasia को लोग understand नहीं कर रहे. They are not able to understand the true meaning. So what are the initiatives taken by some of the palliative care and living wills? WHO, how WHO defines health? We should know. Physical, social and mental well-being beyond just the absence of disease. Health क्या है? सिर्फ absence of disease is not health. Health is overall, it's an umbrella term, inclusive of physical, social and mental well-being. ठीक है? World Health Day मनाया गया था April 7 पे, and we had seen a lot of health related articles on that day. So past and theme for 2024 was My Health, My Right. Now India में क्या क्या है? What are the initiatives for health in India? Which has been evolved by judiciary mostly. Let's look at that. So, Supreme Court in 2018 recognized passive euthanasia and the right to die with dignity as fundamental right subject to guidelines. India Supreme Court, जो कि 3 member उस time bench थी, ruled that the right to health includes right to palliative care. So palliative care का मतलब समझ गया आप. Now Supreme Court in its judgment जो कि 3 member bench थी, has highlighted that right to life includes right to palliative care. Then Supreme Court verdict in 2023, this is very important, it is recent, recognizes advanced medical directives and withdrawal of the support in futility cases. So advanced medical directives है और withdrawal of the life support system in मतलब passive euthanasia allowed है, ठीक है? So you can note it down. Concluding remarks you should know in for such articles. The Lancet Commission report 2020 speaks on the value of the death and that modern society has become death illiterate. So it is more required. Just a minute. Yes. So that modern society has become death illiterate. Therefore, it is much required to bring awareness in our society on the value system of dignified death. So, dignified death की awareness होनी चाहिए. Now, let's look at questions that could come from this type of article. So, modern society has become death illiterate. Second, death illiterate. It calls for death literacy, which brings death back to life. सो डेथ बैक टू लाइफ कैसे हो सकता है? मान लो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया और काफ़ी प्रॉबल है, ऐसे में पूछा जा सकता है, तो विल यू बी एबल टू अटेम्प्ट दिस बेस्ड ऑन द आर्टिकल दैट वी डिस्कस? यस, यू शुड बी. प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने PYQs देखे थे, इस टाइप के टॉपिक्स पे ऐसे आ सकते हैं. लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस टॉपिक. डिस्कस द डिस्पैरिटीज इन एंड ऑफ लाइफ केयर बिटवीन वेस्टर्न नेशंस एंड इंडिया. ठीक है, एंड we have already read end of life disparities कितना West nations and India. Evaluate the ethical considerations, legal ambiguities and societal factors influencing end of life decisions in India. All right, 3 parts हैं. Suggest measures,
इस क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए मैंने. टू प्रमोट डिग्निफाइड एंड ऑफ लाइफ केयर एंड एम्पावर इंडिविजुअल्स टू असर्ट देयर राइट्स इन फेस ऑफ टर्मिनल इलनेस. 250 words, 15 mark. So this suppose this kind of question comes in your examination in 250 words, 15 mark. So should you be able to solve this based on the discussion on the articles that we already did? Yes, you should be. Read the article, understand. I have told you the trickier part. I have explained you the trickier part, like euthanasia क्या है, active euthanasia, passive euthanasia क्या है, palliative care क्या है, life support system क्या है, what is LAMA and DAMA, what is the data which says about these kind of health issues, what WHO says about health, what Indian judiciary says about health and right to health, etc. So you know everything. Now you should be able to put those data information which you have and use them and articulate well and attempt this answer well, and you should be. Okay, so trust yourself, keep reading, keep understanding, and yes, so this is the one editorial that I wanted with you to discuss. I'll see you tomorrow in another daily newspaper analysis, specifically editorial analysis of the Hindu. All right बच्चों, पढ़ते रहिए. तथास्तु.